In this video you will learn how to use drag and drop feature of NetBeans to use list while building GUI in Java. Next video. How to use combo box in Java. Now this is another component which can be used in GUI applications. First of all, what is a list? Sometimes you need to provide a list of choices to the user, and the user will be required to select one of the given choices. So for this purpose you can display a list, and to display a list you can use the JList class. Now the question could be कि हम यही काम कर रहे थे by using radio buttons as well. Remember, radio buttons में भी आप user को कुछ choices देते हैं, and the user will be required to select one of the given choices. The same thing is done with list as well. Now what is the difference between a radio button and a list? अगर हमारे पास the number of choices are limited, like if there are 2, 3 or even 4, 5 choices, तो उस केस में you can use a radio button. In fact, a group will be defined, and in that group these different choices will be given in form of the radio buttons. Lekin just imagine the given choices are like more than 10 or a lot of choices are there, and the user is required to select just one of them. For example, आपने पूरे पाकिस्तान के सिटीज़ की एक लिस्ट दे दी है, और इस लिस्ट में से आप ये चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ. नाउ जस्ट इमेजिन you cannot provide all these choices by using radio buttons, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान के सैकड़ों हज़ारों शहर हैं. उन तमाम सिटीज़ को अगर हम इन फॉर्म ऑफ रेडियो बटन्स देना चाहें तो ये हमारे लिए एटलीस्ट फिजिबल नहीं बनता. तो अगर हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप उनमें से किसी एक चॉइस को सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप फिर लिस्ट के ज़रिए ये वाला काम कर सकते हैं. Now the question is कि हम लिस्ट को कैसे बना सकते हैं. तो टू डिस्प्ले द लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी ये ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो आप उसके ज़रिए यूज़र को लिस्ट दे सकते हैं. यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप this one on the J frame. By default there are some choices given in this list. Let me run this application and see what is the output. You can see these are the different choices, and at runtime you can select one of them. Current choices are just 5, and this is in fact item 1, item 2 and so on. तो हम अपनी मर्जी के चॉइसेस डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, अपनी मर्जी के आइटम्स डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, एंड देन यूजर विल बी अलाउड टू सेलेक्ट वन ऑफ देम. तो ऐसा करने के लिए आप इन चॉइसेस को अगर अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं, देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी विंडो. प्रॉपर्टी विंडो में जाके हमारे पास एक चॉइस बनती है मॉडल. इसको सिलेक्ट करके अगर आप इस विंडो में जाएंगे, तो these are the items which will be displayed in the list at runtime. Let me make some changes in this list. Now this is the in fact scroll bar. Runtime पे ये scroll bar अगर सारी choices इस list में नहीं आते, then automatically this scroll bar will be visible to the user, and the user can scroll the different options and select one of them. Now the question is कि हमें कैसा आइडिया होगा कि which choice is selected by the user. तो ऐसा करने के लिए हमें एक छोटा सा code will be required. Let me display a button on this J frame. The default name of this list is JList1. If this is okay, तो हम इसी को भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं. तो बाय डिफॉल्ट दिस इज JList1. तो इसको अगर हम JList सिटी कर लेते हैं, दिस इज बटन. इसके टेक्स्ट हम सपोज लेट्स से दिस इज ओके, और इसमें जो इसका वेरिएबल नेम है दिस इज J button 1, J button सिटी, या आप कुछ भी कर सकते हैं. तो इसको सपोज हम यहाँ पे कोड लिखेंगे कि रन टाइम पे हमें कैसा आइडिया होगा कि यूज़र ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है. सो फॉर दिस पर्पस हम एक
कोड लिख सकते हैं। द नेम ऑफ द लिस्ट वाज JList city, तो JList city, इसका एक मेथड होता है गेट सेलेक्टेड वैल्यू। तो आप इसको यूज़ करना चाहें तो ये आपको वो वैल्यू या वो आइटम जो आपने सेलेक्ट किया होगा एट रन टाइम, ये वो आपको रिटर्न कर देगा एंड दिस विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल एस। तो दिस इज अप टू यू कि आप अब इस गिवन चॉइस पे क्या करना चाहते हैं। लेट अस डिस्प्ले दिस चॉइस टू द यूजर एट रन टाइम। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सपोज में जे ऑप्शन पेन जो कि नावल यूज़ कर रहे होते हैं टू डिस्प्ले प्रॉम्प्ट्स टू द यूजर एट रन टाइम, आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका एक मेथड होता है शो मैसेज डायलॉग, आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर लें। इसमें फर्स्ट पैरामीटर यूजुअली नल होता है और उसके बाद आप जो चीज़ डिस्प्ले करना चाहेंगे वो आप लिख सकते हैं। सो इन द करंट केस जी ऑप्शन पेन का जो शो मैसेज डायलॉग होगा वो इस एस की वैल्यू को यूज़र को डिस्प्ले कर देगा एट द रन टाइम। नो लेट मी सी कि ये कैसे काम करता है। सपोज द गिवन चॉइस इज लाहौर एंड दिस इज जे ऑप्शन पेन। ये डिस्प्ले कर रहे हैं कि आपने लाहौर को सिलेक्ट किया था इन द लिस्ट। तो आपने रन टाइम पे यहाँ पे जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। द बेसिक पॉइंट वाज कि हमें कैसा आइडिया होगा कि यूजर ने रन टाइम पे कौन सी चॉइस ली है। तो आप उसके लिए अगर चाहें तो गेट सेलेक्टेड वैल्यू का जो एक मेथड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं और ये आपको रिटर्न करेगा उस वैल्यू को जो कि रन टाइम पे यूजर ने सिलेक्ट की होगी।